Wow, what a pleasure to be back again with Mann Darpan. And yes, we are on to season 2, episode 2. Time and tide waits for no one, isn't it? And therefore, time as it flies this merry month of May, we are here with our second episode of Mann Darpan, season 2. And we bring matters that are close to the heart and the mind. Our title today is If It's Got to Be, It's Up to Me. That is what is flashing in our title slide today. And that message is something we very strongly believe that if it's meant to be, it's up to me. कुछ होना अगर है तो ये अपने ही हाथों में है और अपना फ्यूचर चाहे अब अपना कोई भी चैलेंज सामने आया है अपना फ्यूचर को और सुनहरा बनाना ये आज हमारे हाथों में है. We have wonderful people joining us today, but before that, let me share with you a small update of the month that was. I had the opportunity of being one of the speakers at a program called Eid Milan. And this Eid Milan was a very beautiful program arranged by the Muslim community of Kalyan. लेकिन इसमें participate किया बाकी सब faiths के लोगों ने. So we had Hindus, Muslims, Sikh, Isai सब यहाँ पे participate हुए थे. And it was a beautiful gesture of religious tolerance where we understood so much more about each other's religion. The speakers here, and I was very happy to share space with such stalwarts. बाकी faiths के भी जाने पहचाने लोग यहाँ पे आए थे और मजहब आपका जो भी हो मकसद अपना मन की शांति और ये love, brotherhood, peace and humanity is what the best religion is for all of us. This was the message consistently in the program of Eid Milan. I was very happy to be part of it, and over 200 people gathered here, and I had the chance of giving the message of mental health awareness. ये मानसिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा जानकारी अगर हमको मौका मिलता है ये आगे बढ़ाने के लिए तो हम ये कसर कोई नहीं छोड़ते हैं. We must use every opportunity to increase the awareness of mental health. इसी दौरान I had the chance of speaking to people in uniform, and this was a wonderful experience I had this month to speak to over 400 candidates of the NCC and the armed forces, the trainees of the armed forces, the Navy, and these men in uniform. How important is mental health when you are with decisions, responsibilities as important as the people in uniform? तो उनके साथ हमने ये चर्चा किया कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिरता किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है. When there are challenges, when there are difficulties, how can we help ourselves to begin with getting the strength from within ourselves? It was wonderful to have this experience of being with them, to listening to their side of the story of the challenges of mental health that they face and the solutions that we had to offer. Truly unforgettable experience. And now we come to our guests of today, अपना positive mental health ambassadors जो है. So yes, if it's meant to be, it's up to me. सबसे पहले हमारा मुलाकात होगा सिंगर एंड म्यूजिशियन सिद्धेश पाटिल से. वी आर वेरी हैप्पी कि आज हमारे बीच ये उभरता कलाकार, वैसा तो काफी जाना पहचाना है, लेकिन हमारे लिए कुछ ही दिन पहले इट वाज जस्ट बाय अ मैटर ऑफ चांस दैट वी मेट. सिद्धेश याद है ना? 2 दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले, सैटरडे. यस यस बिल्कुल याद है सर. यस यस. तो मैं मेरे परिवार के साथ एक होटल में हम लोग गए थे, एंड while we were having our time in the lobby of the hotel, ये मधुर सा आवाज पियानो के ऊपर जो चल रहा था, we were appreciating that music and we felt so good about it. और फिर खाने के वक्त मैंने देखा कि जो शख्स पियानो बजा रहा था वो वहां पे खाना खा रहा था. And I went ahead to compliment him and to tell him what a wonderful evening he gave us. And बातों बातों में मुझे पता चला कि अपना जो सिद्धेश पाटिल है वो बचपन से ही he has no sight. तो वो बचपन से blind है
but he has made so much for himself at this age of around 25. So I want to know from you, आपसे कुछ बातें करना है. आपकी बातें उस शाम को सुनते ही मैंने मन में तो पक्का ही कर लिया था कि आप मन दर्पण में हमारा अतिथि तो बन ही जाएंगे, और आपने इस इनविटेशन को स्वीकार किया. थैंक यू सो वेरी मच सिद्धेश. कुछ आपको याद है आपके something that you can share with us? uh, yeah, बचपन की यादें कुछ. स्लाइट सच आपकी वॉइस मुझे थोड़ी ब्रेक हो गई है. प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा एक बार हाँ हाँ, रिपीट थोड़ा करें. इंटरनेट का जादू चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. बताइए, यस यस. बचपन के बारे में कुछ यादें. बचपन की वैसे तो काफ़ी यादें हैं, और ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ म्यूज़िकल याद है, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं तो कहूँगा मन दर्पण और सर जी, फेबियन सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं कि उस इवनिंग को आपने सुना मुझे, और आपसे जो मुलाकात हो गई उसका आप इतने आगे, इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर आए मुझे. इसलिए आपका और मन दर्पण का, आपके पूरे टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. एंड थैंक यू. अभी मैं बचपन की यादें, कई यादें हैं ऐसे कि एक तो मैं पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था, तो काफ़ी दिक्कतें आती थी. मैं रेडियो, कैसेट्स और कैसेट्स के ज़माने से भी गुजरा, तो उन सब के लिए मैं ज़िद करता था, अड़ता था, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. तो कई चीज़ है. एक रियलिटी शो में से तो पार्शलिटी होने के होकर मैं आउट भी हो गया था. तो मतलब काफ़ी ऐसा, कहते हैं ना, एक एंग्जायटी जैसा काफ़ी सैड हुआ था. तो अभी मतलब गाना था तो कैसे गाएँगे, आगे आना है था, म्यूज़िक करना है, करियर करना है, तो कैसे करें? तो अ, कैसे-कैसे करके मतलब काफ़ी प्रैक्टिस किया, और दिल खोल के गाया एकदम म्यूज़िक अकेडमी में. और मुझे बचपन में एक याद आने वाली एक बहुत ज़बरदस्त पॉज़िटिव चीज़ है सर जी. हाँ अ, हाँ. वो चीज़ ये है कि जब मैं 11 साल का था, व्हेन आई वाज़ 11 इयर्स ओल्ड, मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली थी कि ग्रेट अपॉर्च्युनिटी टू वर्क इन ऑस्कर विनिंग फ़िल्म स्लमडॉग मिलियनेयर, अरे जिसमें वाह. आप देख सकते हैं, उसमें मेरा रोल है, जिसमें मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन करके मेरा डायलॉग मैंने बोला है. मेरा अरविंद नाम अच्छा. होता है उसमें. हाँ सो हाँ. आप जब भी देखेंगे तो ज़रूर आप मुझे याद कीजिएगा. आप सभी ऑडियंस से मैं अब कहना तो चाहूँगा. बनता है कि मैं वो फिल्म वापस देखूं, आप ही के वजह से, आप ही के लिए. Yes, that is so beautiful. You have a wonderful memory of your 11-year-old childhood, जहां पे आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था. और मुश्किलें चाहे जो भी हो, आपने दिल खोल के उसका डट कर सामने किया. Isn't it? यस यस. और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे, मैं शेयर करना चाहूँगा कि मुझे हम्म. साथ मिला तो वो मेरे प्रैक्टिस का, कि मैंने मॉर्निंग में उठ के काफ़ी रियाज़ किया. फिर मतलब कुछ दिन मेरे जैसे मैंने कहा ना कि रियलिटी शो सारेगामापा जिसमें मैं गया था, तो पार्शियलिटीज़ से आउट हो गया था मैं. ओके. सो उसके बाद कुछ दिन मेरे ऐसे एकदम, बोलते हैं ना, एंग्ज़ायटी में, सैडनेस में गए. लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने शुरू किया मॉर्निंग रियाज़. सो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करता था उठ के, रेगुलर वो चालू हो गया ना, तो अलग से मुझे शोज़ का एक बोलते हैं ना, एक अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी मिलते गई, शोज़ पे शोज़ की बौछार लग गई. तो मैंने पहले मेरी जैसे वॉइस चेंज हो जाती है ना, हमारी मेल हाँ हाँ. वॉइस जो है आफ्टर 14 चेंज हो जाती है. तो काफ़ी Right. डिफ़िकल्टीज़ एक तो सिंगर्स को फ़ेस करनी पड़ती है वॉइस चेंजिंग के वक़्त. गले का काफ़ी ख़्याल रखना पड़ता है, वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस हिसाब से. तो मैंने वो किया, वो प्रैक्टिस करी मैंने मॉर्निंग उठ के. और सर जी, मॉर्निंग की जो मेहनत होती है, वो इतनी काम आई कि आज मैं इस मकाम पे हूँ. मैं पियानो भी बजा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड Yes. मैं परफॉर्म भी कर चुका हूँ. जैसे कुछ जगह मैं बता सकता हूँ, जैसे दुबई, अबू धाबी, मस्कत, ओमान, और ऑल ओवर द इंडिया हम लोग बोल सकते हैं. जैसे महाराष्ट्र से पंजाब तक. बहुत ही बढ़िया.
या दिल्ली, साउथ हाँ इंडिया हाँ। पूरा, तो सब जगह परफ़ॉर्म करने की अपॉर्च्युनिटीज़ इसी वजह से मिली कि मॉर्निंग में मैंने रियाज़ किया, उस प्रैक्टिस ने मुझे इतनी पॉज़िटिविटी दे दी कि अब आफ्टर द ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन तो अपना बीए में किया, उसके बाद वेरी मेरा जो गुड। पूरा करियर, पूरा फ़ोकस जो है सर जी, हम्म। पूरा म्यूज़िक पे है। म्यूज़िक ही मेरा अर्निंग है, म्यूज़िक ही मेरा खाना-पीना है, और पूरा म्यूज़िक ही, मेरा दोस्त भी म्यूज़िक है, सब कुछ म्यूज़िक है। ओके, तो एजुकेशन आपने बीए तक किया, साथ में इतना रियाज किया, और आपने यस, जैसा आपकी बातों से जो समझ में आता है, अपना क्लास जो भी हो, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, असली अमानत तो अपना हुनर है और अपना हार्ड वर्क। दैट इज व्हाट जी, यू हैव प्रूव्ड सिद्धेश। और इसके लिए मिशेल, अर्चना, चैत्राली, साइडर, जेनेट, कमलाकर, ये सब अपने शो देखने वाले लोग आपका प्रशंसा कर रहे हैं। And हाँ, we feel so proud to be and so great to be in your company in this show today. राइट, आप एक मिसाल बन जाते हैं दूसरों के लिए। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो थीम है, इफ इट्स गॉट टू मी इट्स अप टू मी, इफ इट्स गॉट टू बी इट्स अप टू मी, आप इसका तो परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाते हैं। राइट। ऐसा थैंक यू भी तो सर। हुआ रहेगा कि जिंदगी में मुश्किलें भी आए रहेंगे, आपने कभी कुछ हार मानना जैसा एक एहसास हुआ रहेगा, ऐसा भी कभी कोई वक्त, कभी कोई एक्सपीरियंस था? काफ़ी आया है सर एक्चुअली, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डेली ट्रैवलिंग में एक्सपीरियंसेस आना, पब्लिक का कॉर्पोरेशन एक तो नहीं मिलता है बॉम्बे में जल्दी, और बॉम्बे से बाहर जाए तो और बुरा हाल होता है कि अ, जब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग सीक करते रहते हैं ना म्यूज़िक में या कहीं भी किसी भी जगह पे, तो सर जी राइट। मन दर्पण को मैं थैंक्स कहूँगा ये चीज़ बोलने के लिए, ओपन करने के लिए मुझे ये जो जगह दी है इन्होंने, राइट। तो ये राइट प्लेस है, मैं बताना चाहता हूँ सर जी कि वी आर बिल्कुल। विजुअली इम्पेयर्ड, दैट्स फाइन, बट आई थिंक सो वी आर डिफरेंटली एबल पीपल, कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग हर एक चीज़ आप ही लोगों की तरह कर सकते हैं। तो मतलब आँखें नहीं तो क्या हुआ, हम लोग ब्रेन से सारी दुनिया, दिल से सारी दुनिया देख लेते हैं ना सर जी। बहुत बढ़िया। ये तो बात में इतना दम है सिद्धेश कि इसको जी, हम लोग बार बार दोहराएंगे आपके नाम से। और इतना, जैसा सलमान खान का डायलॉग फेमस होता है ना कमिटमेंट के बारे में, वैसे आपकी बातें हम लोग सबको सुनाते रहेंगे, क्योंकि ये बढ़ाना, ये जागृति, जन जागृति करना बहुत ही जरूरी है, टू मेक जी, पीपल अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंटली एबल्ड। इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैंडीकैप्ड और एनीथिंग लाइक दैट। और जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं, हमको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, एम्पैथी की जरूरत है। यस, अंडरस्टैंड हम लोग क्या मुश्किलें से जाते हैं। A lot of our places are not even disabled friendly. You know, it is not easy for people to travel, as you said, not easy for people to occupy seats or be comfortable when they have visual problems. So that is something we must all work for, to make our society much more accepting and approachable, for accessible for people with such deficiencies that are there. But you are differently abled, and that is what matters, that आपकी काबिलियत जो है, आपका एनर्जी बन के आपको आगे लेता रहेगा। थैंक यू सर इन शुभकामनाओं के लिए। मैं बहुत-बहुत आपका, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो आपने अ, अभी कही है, वही चीज़ सारे ऑडियंस से कहना चाहूँगा। वी डोंट वांट पिटी, वी डोंट वांट चैरिटी, वी जस्ट वांट ओनली द अपॉर्च्युनिटी। आप हमें अपॉर्च्युनिटीज़ दीजिए, हम लोग इसको गोल्ड में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। और सर जी, एक बात ज़रूर दिल खोल के बताना चाहूँगा कि मेरे हम्म। फ्रेंड्स हैं, मतलब ये एक्सपीरियंस मैंने भी खुद किया है काफ़ी, मतलब इकोनॉमिक जो रेट हमारा, इकोनॉमी का जो इश्यू हो गया था 2019 से, जो हम लोग फेस कर रहे हैं, उस राइट। वक़्त से मैंने म्यूज़िकल अपॉर्च्युनिटीज़ में, मतलब ऐसे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ सर्च करना स्टार्ट किया था। तो क्या होता था कि हम लोग को गेट से ही बोलते थे, "अरे यार, आप तो आप लोग देख नहीं पाते, तो कैसे आप लोग कर पाओगे?" तो ऐसे ही, मतलब लैपटॉप्स कोई लेके जाते हैं। अभी इतने अच्छे से आप देख पा रहे हैं सर जी कि फ़ोन ऑपरेट करना हो, चाहे लैपटॉप ऑपरेट करना हो, डेस्कटॉप हो, मैकबुक हो, आईओएस हो, एप्पल हो, विंडोज़ हो, एंड्रॉयड हो, गूगल हो, जो भी।
हर एक चीज़ हम लोग ऑपरेट कर पाते हैं, हम लोग किसी चीज़ में कम नहीं सर जी। लेकिन हम लोग के साथ ये होता है सर जी, ये होता है सर जी हम Yes. लोग के साथ कि हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ जब सीक करने जाते हैं, हम लोग उस प्लेस पे जाते हैं, तो हम लोग को गेट से ही बोलते हैं कि आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग को हम बताएँगे, लेकिन वो कुछ बताते नहीं है बाद में, कुछ फ़ॉलो-अप ही नहीं लेते हमारे बारे में। कई सारे फाउंडेशंस में ऐसा होता है, कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे फ्रेंड्स के साथ ऐसे होता है। सर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करूँगा कि आप इस चीज़ की अवेयरनेस अ, ज़रा करेंगे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से, तो हम लोग को काफ़ी हेल्प हो जाएगी मन दर्पण की और आपकी टीम की। Zarur, Zarur, Zarur. And that is why your confidence is being admired by everyone. Your sense of balance of mind is being admired by everyone. Vandana, Sulba, Shanaz, Misbah, Nishta, Leslie, ये सब आपका तारीफ के साथ उनके messages आ रहे हैं. So you are definitely a role model of sorts for everyone. ये आपको जैसा आप बोलते हैं सोसाइटी एक इंक्लूसिव सोसाइटी के तरफ हमको बढ़ना है विद इक्वालिटी वे वी अप्रिशिएट पीपल्स हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी एंड गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर टैलेंट सो दैट दे कैन डू व्हाट दे कैन डू बेस्ट ये प्रॉमिस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका कहानी हम आगे सब तक पहुंचाएंगे ये मन दर्पण का दावा है ये डॉक्टर अल्मेडा का दावा है we also want to say that you have you have been playing so many instruments and you have been playing so many different varieties of songs and music at different hotels functions ceremonies देखिए जरूर याद रखिए अगर किसी को कांटेक्ट करना है और सिद्धेश को ये अपॉर्चुनिटी आपको देना है आपके प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए just get in touch with us and we will see that you can give him that beautiful opportunity to experience a wonderful Yes, so we will make sure that we are able to take your quality of music, your quality of talent to society all around. Siddesh, जाते थैंक जाते, you had mentioned कि ये एक इंग्लिश अंग्रेजी हिम है जो आपके दिल के करीब है, उसके words बहुत अच्छे हैं, and we would like जी, to hear the words of that English hymn. यस यस सर, मैं वो वर्ड्स ज़रूर आप सभी को, सारी ऑडियंस को सुनाऊँगा और फिर एक बार मतलब मन दर्पण और सर जी आप सभी का शुक्रिया इसलिए करूँगा कि ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जो मतलब ऐसा काम कर रहा है, जो जिसके बारे में लोग अब भी काफ़ी जगह पे अवेयर नहीं है, तो लोगों को काफ़ी अवेयर होने की ज़रूरत है। ये बहुत सुपर्ब इनिशिएटिव है सर जी। सो इसके लिए आपको हम सभी की ओर से भी ढेरों सारी शुभकामनाएँ मेरी ओर से और मेरे फ्रेंड्स की ओर से। सो Sure. वो वो जो प्रेयर है एक मैं साउंड Yes. ऑफ म्यूज़िक करके कॉन्सेप्ट उसमें परफ़ॉर्म करता था। उसके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, Okay. अमेज़िंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise, and grace will lead home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you, sir. बहुत ही खूबसूरत और देखा जाए तो हम सब एक तरफ से अंधे ही हैं we are blind sometimes to the injustice around we are blind sometimes to mental health problems around and it is time we all open our eyes to see the reality and do the best that we can for everyone in society with equality. So thank you once again, Siddesh, for being our guest. Thank you for Thank you. sharing your story. You are a role model, and all of us salute you
for all that you have managed to do this far and will continue to do ahead. Thank you once again for being our guest. Lots of love and luck from all of us here. We will be in touch with you always. Thank you, Siddesh. Thank you once Thank again. you. Thank you, Mann Darpan. Thank you, sir. थैंक यू। देखा आपने सिद्धेश की कहानी, और यूं ही इत्तेफाक से कुछ दिन पहले मेरा मुलाकात उनके साथ एक होटल के लॉबी में हुआ है। ऐसे ही कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग मिलते हैं और उनके तरफ से हमको इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलता है कि उनकी कहानी अपने तक ही मत सीमित रखो, शेयर इट विद अदर्स एंड लेट पीपल बी experiencing that positivity. Well, 24th of this month, May, was World Schizophrenia Day. We have a slide to flash to show you that schizophrenia is an illness of the mind. और इसके लिए हम लोग ने Spotify पे एक podcast भी किया है. We created awareness workshops and seminars also. And today we will show you the story of KESHAV, that we will understand what exactly is schizophrenia and help us spread awareness further. Please help me welcome today with us केशव का चाचू जो है, जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस शो में. सो लेट्स हैव हिम कम थ्रू. आइए हमारे साथ जुड़ जाने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू सर. यस, टॉकिंग अबाउट केशव. केशव का उम्र कितना है? 22 साल. 20 years. एंड ये केशव का चाचू है. केशव का मम्मी डैडी कुछ साल पहले क्या हुआ था? डैडी को शुगर और टीबी हुआ था और रिसेंटली 6-7 मंथ में ऑफ. ओके, 2011 में. 11. और उसका मम्मी 2013 में ऑफ. 2013 में. तो ये केशव जिसके बारे में हम लोग बात करें और कुछ मिनटों के बाद मिलेंगे भी, उनका मम्मी डैडी दोनों कुछ टाइम पहले गुजर गए, और ये उनका चाचू है जो उनको अपना ही औलाद जैसा संभालते हैं, प्यार देते हैं और सब कुछ देखते हैं उनके लिए. और कुछ टाइम से इनके जिंदगी में, केशव की जिंदगी में एक बदलाव आ गया. उसके सोच विचार और बर्ताव में फर्क आ गया. What were these changes? Let us see as what he tells us. क्या क्या हो गया था कुछ टाइम से? ये मंथ के 10th या 12th से जो एकदम अलोनली फील कर रहा था वो. तो मुझे लगा कि चलो अकेला रहता है, स्कूल के बाद कुछ करता नहीं. मैं ठीक. फिर मेरे को बोला चाचू मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना. मैंने ठीक है बेटा चल. लेके गया उसको, डेमो दिखाया उधर के सर ने मोबाइल रिपेयरिंग के. बोला ठीक है चाचू मैं कर लूंगा. तो मैं बोला ठीक है. दादी के साथ को विलेज जाना था. तो बोला चाचू मैं विलेज जाके आने के बाद मैं करता हूँ. तो मैंने उसको सेंड किया. फिर वो आफ्टर 10 days वो रिटर्न किया. फिर 10 days गैप देके वापस लेके गया. बोला चाचू मैं ज्वाइन कर दिया. फीस भरने के बाद वो बोला सर मैं कंटिन्यू करता. फिर फर्स्ट डे नहीं गया, फिर सेकंड डे गया, फिर थर्ड गया, फिर 4th डे नहीं गया. बोला चाचू मेरे बॉडी पेन है. तो मैंने ठीक है डॉक्टर को दिखा. डॉक्टर बोला कुछ नहीं, बॉडी के हिसाब से ये रहेगा. फिर मैंने उसके बाद टैबलेट लिया, थोड़ा रिलीफ हुआ. फिर बाद में सडनली वो क्लासेस जाना बंद कर. फिर मैं बोला क्लासेस को फोन किया, आ रहा है मेरा भतीजा? बोलता नहीं आ रहा नहीं कैसे. फिर उसके दादी को फोन किया. दादी बोलती है नहीं उसको तबीयत ठीक है. फिर मैं जाके घर पे विजिट में दादी के पास. मैंने क्या हो गया मम्मी? बोलता है तेरा भतीजा ऐसा ऐसा कर रहा है. मैंने क्या कर रहा? बोलता पहचानता नहीं है, खाता नहीं है, रोता रहता है, ये तो मेंटली डिस्टर्ब है. मैंने क्या? फिर डॉक्टर के पास लेके गया जो जनरल अपने फैमिली डॉक्टर है. मैंने बोला रेफरेंस किया कि मेंटली दिमाग का डॉक्टर है तो हाँ दिमाग के डॉक्टर आपका रेफरेंस दिया. हाँ तो मैं बोला चलो. मम्मी को बोला, वो उधर के डॉक्टर बोले, फैमिली डॉक्टर बोले 2 days से मेडिसिन दो, उसमें फर्क है तो मेरे को रिपोर्ट करो, नहीं तो आप मानसिक डॉक्टर के पास जाओ. फिर उसके बाद आपको मैं कॉन्टेक्ट. तो बहुत जरूरी है हमको अपने फैमिली डॉक्टर की बातें सुनना. जब फैमिली डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये बात थोड़ा सा मन से लागू पड़ता है और वो आपको मानसिक डॉक्टर के पास भेजते हैं, तो मानसिक डॉक्टर तक पहुंचना जरूरी है. बहुत सारे लोगों को लगता है पागलों के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, लोग क्या बोलेंगे, पागलपन का बीमारी है वगैरह, लेकिन ये गलत है.
अगर दिमाग से जुड़ के कोई तकलीफ है तो दिमाग के डॉक्टर तक पहुंचना जरूरी है। क्या हुआ था? कुछ दोस्तों के साथ शायद अनबन वगैरह हुआ था केशव के साथ, और 2 साल जो कोविड था उसमें हमारा बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, ये सब परिवर्तन आ गया था हमारे लाइफस्टाइल में, एंड दिस कैन ब्रिंग अबाउट लॉट्स ऑफ चेंजेस इन आवर मेंटल बैलेंस। तो ये भी अकेला अकेला रहने लगा, और कुछ हफ्तों से अभी वो चुपचाप रहने लगा। कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी अपने धुन में चला जाता था, कभी उसको डर लगता था, रात का नींद भी बराबर से नहीं आता था। और ये हट्टा कट्टा आप देखेंगे केशव को कुछ ही क्षणों में, ये हट्टा कट्टा लड़का अब खाना कम खाने लगा, उसका जैसा पचन ही नहीं होता था, अपने सोच में रहता था। एक बार तो उसने चाकू भी निकाला था, और उसको वो कंफ्यूजन था, करूं भी तो क्या करूं, खुद को कुछ करूं या दूसरों को कुछ करूं। तो ये जब फैमिली में हो रहा था, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो। केशव एक छोटा भाई है, और वो छोटा भाई भी उस पे बहुत दिल लगाता है, तो वो भी परेशान था। और इनफैक्ट पहली बार आप काम पे थे तो वो खुद लेके आए थे उसको, और फिर आपसे मुलाकात हुआ। लेकिन ये पूरा परिवार एकजुट होके केशव को इस तकलीफ से निकालने का पूरा कोशिश कर रहे थे। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किज़ोफ्रेनिया में कभी कानों में आवाजें आता है, किसी और का कोई हमारे ऊपर कुछ लेना देना हो सकता है, किसी ने कुछ जादू टोना किया, ऐसे विचार हमारे मन में आता है, हमको दूसरों पे शक आता है, और ये डर हमको खाए जाता है, इसलिए नींद कम और खाना भी कम हो जाता है। और ये बर्ताव घर के लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना है और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लाना है। तो इस तरीके से अगर फैमिली एक साथ रहेगा तो बदलाव जरूर आएगा। हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस भी करना चाहा, क्योंकि कभी ऐसा भी होता था कि केशव को पता नहीं चलता था क्या हो रहा है, कभी बिना कपड़े को नहाने के बाद वो बाहर निकलता था या कंफ्यूज होता था। तो इसलिए हमने उनका दिमाग का स्कैन भी किया, इमेजिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, एमआरआई स्कैन किया था, एंड थैंकफुली द स्कैन वाज नॉर्मल, राइट। तो वो देखना जरूरी है कि 10% लोगों में हो सकता है कोई सूज गांठ रक्त वाहिनी का तकलीफ, there could be some neurological involvement or some other problem, a tumor, etc., in the brain that could cause these psychotic symptoms. तो एमआरआई करने के बाद जब पता चला कि बाकी वो सब ठीक है, तो वी रियलाइज कि ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है, और ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी पड़ता है। ट्रीटमेंट शुरू कर दिया हम लोग ने, दवाई गोली जो आउटलाइन किया था, और कुछ ही दिनों में, हफ्ता के बाद जब देखा, वी हैव सीन इम्प्रूवमेंट इन हिम। अब वो थोड़ा सा हंसता है, स्माइल करता है, आप लोग से बातें करता है, और जो इन्वॉल्व होने लगा है फैमिली के साथ। पहला दिन जब वो आया था तो मेरे क्लिनिक में बैठ के रो रहा था, अब उसके चेहरे पे थोड़ा हाव भाव आने लगा है, और वो दवाई गोली के लिए राजी है। ये कहानी आप तक पहुंचाना क्यों जरूरी है हमारे लिए? एक अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। लोगों को ये बीमारी क्या है, शायद ऐसे लोग रहेंगे जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि ये दिमाग से लग के है, और दिमाग के डॉक्टर तक पहुंचना है। आप जहां पे भी हो, आप वहां पे आपके दिमाग के डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ तो करो। काफी बार लोग तावीज पहनाते हैं, या दरगाह पे जाते हैं, या उल्टा पिसन सा कोमड़ी जो है वो काटते हैं, ये सब करते हैं। ये सब भी करो, और जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं, दुआ और दवा दोनों चीज जरूरी है। तो इसलिए ये सब ध्यान रखते हुए मानसिक डॉक्टर तक आना जरूरी है। हम अपना काम करते रहेंगे, आप आपका काम करो, लेकिन एक 22 साल का बच्चा अगर दिमाग का तकलीफ लेके अब नहीं पूरी तरह से ठीक हुआ, तो उसका पूरा फ्यूचर जो है वो बिगड़ सकता है। और मानसिक बीमारी ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, ये अक्सर 15 से 25 के उम्र के बीच में सामने आता है, और स्ट्रेस एक काफी बड़ा कारण होता है। तो स्ट्रेस तो जिंदगी का एक हिस्सा बन ही चुका है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, एंड वी रीच आउट टू पीपल इन अवेयरनेस। और ये धब्बा जो होता है ना लोगों का, मानसिक डॉक्टर के पास जाना, लोग क्या कहेंगे, वो क्या होगा, वो क्या बोलेगा, इसके वजह से आप अपना जिंदगी या अपनों का जिंदगी दाव पे मत रखिए। प्लीज लेट दीज थिंग्स नॉट अफेक्ट यू।
No shame, no stigma when it comes to mental health. Take care, and like we always say, a stitch in time saves nine. जल्द से जल्द आप आएंगे तो फर्क फायदा भी उतना ही जल्दी देखेंगे. So we want people like केशव और केशव का चाचू कि आप कहानी आए हमारे साथ शेयर कीजिए. यहाँ पे आके सबके सामने आपका कहानी बोलना इतना आसान जरूर नहीं है. इट टेक्स अ लॉट टू बी एबल टू शेयर, लेकिन ये आप कर रहे दूसरों के लिए, ताकि और किसी घर में अगर केशव हो तो वो तकलीफ बढ़ता ना जाए, उसमें फर्क फायदा जल्द से आए अगर उन लोग मानसिक डॉक्टर के पास जाते हैं तब. सो वी आर वेरी हैप्पी आपने उसको अपने औलाद के जैसा ही संभाला है, पाला है, और दो भाइयों में भी आप इतना प्यार देखते हैं. तो ये सब बड़ा काम आता है मानसिक बीमारी से निकलने के लिए. लव, empathy, empowerment, this is all things that help in the support and understanding of the patient and reintegration back into society as what it was before, or even better than what it was before. So थोड़ा चलो केशव से भी दो बातें होते हैं. आते हैं, केशव को बुलाते हैं. आओ केशव. आओ बैठो. यस, आपकी कहानी हमने दूसरों तक पहुंचाया, राइट. और आप पहला डरते थे, आप कोरोना आता था. अभी आप दवाई गोली ले रहे हैं ना बराबर से. हाँ. और अभी आपको समझ में आता है कि ये दवाई गोली लेना आपके लिए जरूरी है. यस. अभी आपका मन का डर थोड़ा कम हो गया है केशव. यस. थोड़ा स्माइल भी करो बाकी लोगों के लिए. थोड़ा और ज्यादा स्माइल. हाँ. पहली बार जब आप इधर आए तो आंखों में आंसू था ना, आपका रोना हो रहा था. अब आपको फैमिली से जो प्यार मिलता है, जो ताकत मिलता है, और ये दवाई गोली के साथ जो आपका सिलसिला फायदा का आगे बढ़ रहा है, उसके साथ हम जरूर आपको बताते हैं कि इम्प्रूवमेंट और अच्छा होगा. It takes around 4 to 6 weeks to see good improvement with the medications that are there. और 4-8 महीनों का ट्रीटमेंट तो लगता है, किसी में कम किसी में ज्यादा. लेकिन अपने डॉक्टर की बात सुनो, करो वो जो बोलता है, और 50% दवाई गोली का असर रहेगा. बाकी 50% आप जो करते हैं अपने लिए, आपके घर परिवार जो आपको सपोर्ट देते हैं, इन सब चीजों के साथ जुड़ा हुआ है. तो धीरे धीरे जब पेशेंट को अच्छा लगने लगता है, तो थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा एंटरटेनमेंट जो हो, गाना वगैरह, अपनों से बातें करना, लूडो खेलो, मोबाइल के कुछ गेम्स खेलो, घर के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, तो आपको लगेगा और महसूस होगा कितना अच्छा चल रहा है कि नहीं. करेंगे ना आप ये सब. हम्म. और आपकी कहानी अभी बाकी सब ने सुन लिया, और उन लोग सब ने आपको बड़ा बड़ा शुभकामनाएं दिया है, right? Good wishes. We have Manoj, Arshana, Vinod, Tiara, Tian, Seidel, Janet, Misbah, Leslie, Sulba. ये सब लोग बोल रहे हैं कि निश्चिंत रहो, निडर रहो. ठीक है. हर तकलीफ का एक हल होता है, हर बीमारी का एक ट्रीटमेंट होता है, मानसिक बीमारी का भी ट्रीटमेंट होता है, और उससे कोई डर नहीं, उससे कोई शर्म नहीं, राइट. वी आर सो हैप्पी to have Keshav's story with us. And once again, we flash that slide of 24th of May being World Schizophrenia Day. 24th of May is World Schizophrenia Day, and that is why in this month we create awareness. ये दिन ऐसा क्यों मनाया जाता है कि लोग इस बीमारी को समझ सके, इसके बारे में जानकारी हासिल करें, जागृत रहे, सतर्क रहे, और ट्रीटमेंट के तरफ ध्यान दे दे. So do listen to our podcast on Spotify on about schizophrenia. Repeat, we have done these shows that are decoding schizophrenia, which was an episode on Mann Darpan. This episode as well, and spread the awareness so that people are aware. That is important. Moving on, thank you very much आपकी कहानी के लिए, and we wish you all the best. Smile करो. Yes. Very good. Okay. Thank you. Thank you very much. This date is also important. This date is also important because it is also the anniversary of my parents, the 50th anniversary of my parents, marriage anniversary. और इसके लिए I think ये एक example मेरे लिए बनता है
और मैं ये एग्जाम्पल आप लोग के लिए शेयर करता हूँ. 58 years of love and togetherness, it definitely means that the couple must have patience, tolerance, communication, एक understanding एक दूसरे का, sacrifice जो बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में, support एक दूसरे को, और इतने सारे छोटी छोटी बातें जो मिलके एक रिश्ते को चमकाता है. This is what relationships are about. And I think जो मम्मी डैडी से हमको परवरिश मिला है, जो फैमिली वैल्यूज मिला है, आज हम उनको इतना अहम समझ के अपने बच्चों को वही ट्रेनिंग देना चाहते हैं. So let us learn from our parents and let us be good parents to our children so that our children also learn to be good parents. And therefore it is said, child is the father of man. Truly, rightly, child is the father of man. Let's move ahead to have another interesting personality with us. We have with us as our third guest today, ALVITA DESA, a counseling psychologist. And I ask you to join us today evening, right? Great on a Saturday evening today, 28th of May, our third guest for Mann Darpan that takes the topic further. If it's got to be, it's up to me. We have ALVITA DESA. And ALVITA DESA, your story is also something that strengthens us and teaches us that life is uncertain and life is unpredictable. You, your family revolved only with you and your husband. And then you were working. What were you working as? I was an IT professional for 17 years. 17 years as an IT professional. So that's a lot of uh, technicalities involved. There's a lot of skills involved in all of that. And then, like I remember you saying, your husband was unwell, and then you left your job to take care of your husband. What were the difficulties you experienced at that time? What was it like? How did you manage? As you have already informed the people, and you know that we were just two of us staying Yes. together, and it was a very nice. It was a love marriage, so Okay. definitely we knew each other. We were dating for one another, and then we dated one another, and then we got married. Once he fell ill, it was I initially tried to manage my work because I was working as a project manager. So again, it That's was a lot of a lot of responsibility, responsibility. project managers. Yes, and the travel time, again the home. Even though I had one maid to do the cleaning, but still it was they were not everything was not to be done by the maid. So that and managing also, as I said, work, hospital Home visits, duties, yes, home hospital. duties. My father-in-law, Okay. he's elderly, so and he has dementia. Okay, Yes, that is so again another challenge, the yes, illness of yes, forgetfulness yes. that comes usually after the age of 60. So that was your My father-in-law. father-in-law who was Yes, suffering yes. from that. And so I had to make sure that he would have his meals on time, take his medication, because sometimes he would take his medication and then forget about it. So he was not aware of, and he would say, I've already taken, and he has not taken. So we had a, system to Right, check. right, to check. Yeah. So that, and then the hospital visits of my husband, it was quite a hectic time It for was me. difficult. And once his health started deteriorating a lot, at that point of time, I felt I should, pay more attention to him. So it was a challenge. I thought about it, but I felt like, what is life? Like, Yes. if I have loved this person, I should take care of this person. Beautiful, I think. Yeah. You realize that giving him time while he was not in his Yes, best yes. health was very important. So Yes. you sacrificed, Yes. you gave up your job, and you gave him all of your time Yes. to help him through. Yes, yes. तो शायद जब इतना प्यार है किसी से, तब वो ताकत भी मिल जाता है कि हम सैक्रिफाइस कर सके और जो भी कर सके उस सिचुएशन में, in that difficult situation, we try to bring the change we can. But sometimes destiny has other plans. ये सब करने के बावजूद, you did what you could do best, but then your husband expired. Yes. And that was before the COVID, Yes. right? So, Mr. का गुजर जाना, उनका अकेला पड़ना, कोविड 2 साल का जो था,
ये सब तो काफी मुश्किल हुआ रहेगा. How did you manage in this period of time over these 2 years and the difficulty of losing your husband? Yes, losing your loved one is very difficult for anybody, and definitely I went through a period of grief. I, uh, but I expressed my feelings. I believe in expressing my Very feelings. good. Yes. So I did express my feelings, whether it was through a diary, whether it was just looking at his photo and talking to him. Even I have done that, so that my emotion was whatever was pent up emotion, whatever my disappointments, everything. I used to speak to him about it. People would tell me that okay, enough, but I said there's no time. Everybody's grief is It's different. different. Very true. We cannot tell somebody that okay, it's enough time that you grieve now, move on, or think about your future. So what I did realize was that if I started questioning myself after the period of active grieving, which was for about a month or two, I started asking myself two important questions. One was, what would my husband want me to do Okay. after he has Yes. left? Would he be happy to see me crying and all the time? Very good question. And the Yes. second question was, if the roles were reversed, what would I want my husband to do? Hmm. So, as Okay. both of this, when I reflected upon these questions, I felt that we would not want the other to be sad all the time, and we would want the other to find a purpose in their life. Right. So, thinking about this, I decided to find my purpose in life, and which has led me to psychology and to Okay. this field. ओके, तो देखो, तकलीफ, गम, मुश्किलें, ये सब को पार करते हुए जब किसी को ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में हम करें तो क्या करें, ऐसा जो गया है आगे, someone who is dead at this point of time, what would they want from me is a wonderful thought to keep in mind. The expectation of people who are no longer with us. We definitely know that people who love us will not like to see us sitting doing nothing. They would like us to be involved, active, and move on with life. But how we do it, how we address our grief, हम अपने दुख और तकलीफ को तो छुपा नहीं सकते हैं. Like Alvita did, expressing it is important. नहीं तो अंदर ही घुटन सा हो जाता है. ये अपने आप को सीमित मत रखो, एक खुलासा दे दो. Share your grief, bring it out, whether it is writing on paper, whether it is writing in a journal, whether it is talking about it to your loved ones, others in the friends and family circle that is there. Bring it out, have a nice drainage of your emotional hygiene, and start getting busy as you can. Trying to keep your mind and body active is always one way of helping you overcome psychological challenges. And इनको अब लगने लगा कि शायद मेरा calling is with mental health. If you began to feel like this, what did you do to try to make your dream a reality? Um, uh, okay. Once I started reflecting, I tried, whether I should go back to my job. Okay. I thought about all these matters, and I said, let me take time for myself, to realize what is my purpose in life. Because when I was working as an IT professional, I'm thankful and grateful for all the opportunities. I have worked abroad. I've worked with so many wonderful, talented people. And the experiences, Yes, I guess, that you've taken experiences, in. yes. And so it was a wonderful experience. But I didn't find that it was a calling for me. It was not my life calling. Somewhere deep down, I always felt, no, I should do something that is more meaningful for me. Okay. Now, what is meaningful for me was, since childhood, I've been very interested in how people behave, what they are, and unconsciously, I kind of observe people. Observe. Okay. So unconsciously, it was a habit, or I would not say habit, it was not consciously done, but unconsciously, the small tics, the small habits, uh, actions, or the speech, it would register with me. Okay. So, and I was always interested, like, what are the motivations behind this person's actions? And Or, were you always people friendly? लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, उनके साथ जुड़ जाना, ये पसंद था आपको पहले से? I like people. I am empathic towards people, but I would term myself as an introvert. Okay. Okay. So I am not very social.
a sociable person. Right. My energy kind of drains. I feel sometimes if Right, I am right. in a party for a long खुद को period of time. पहचानना कितना जरूरी Yes. होता है और उसके बावजूद if you can reach out to people and you're feeling in comfort zone, Yes. then that is an achievement for you. Yes. Very good. Okay. So I decided I started taking courses in again COVID had come at Right, that point right. of time. So So I think there were a lot of online courses that were available, yes, yes, and yes, you took advantage of all of yes, that, yes. I did as all for much as mental health. possible. Yes, as much as possible. Very I good. did that. Okay, so lots of courses online on mental health. और फिर आपने एक course for even an IGNU. You have Yes, enrolled yes. for your I have course. done my. I'm doing currently doing my masters in clinical psychology from IGNU. Very good. And you have your guide and you've taken Yes. your topics and you're working with all of that. तो अब एक 360 degree turn हुआ है. From technical stuff and software, etc. You are now dealing with sensitivity, with people and connecting with mental health. तो ये दिल की बात हुआ है. दिल से ये एक जोड़ मिला है. And that passion is what Alvita is following. We also want to know when you go through stress, what are your stress busters? How do you face challenges in life? Okay, my stress busters. I practice gratitude a lot. Okay. I am grateful for everything that is happening in my life. That is happening in my life. In the morning when I get up, I thank God for this day that He has Yes. given me, for the new opportunities, for the new learnings. And the night, I thank Counting God. your Yes, blessings. counting my blessings is Very one. good. Second is I enjoy reading a lot, watching documentaries on all subjects. Okay. So more towards mental health. Very good. So I like that, and that is one de-stressor for me. A good de-stressor would be even my pets. I have two pets. Yes. I have two dogs. Pets are pet therapy, in fact, is something that we feel so good about when we share time with animals or with our pets that we have. You have how many pets? I have two pets. Okay. One is a Labrador and one is a pug. Okay. And apart from that, I am also trained as a classical dancer. So I take time Oh, for very good. practicing So my. you practice your. Yes. I didn't know that. Now that's a good thing to Yes, know. yes, Classical dancing, yes, and dancing is exercise by itself. yes. और आप अगर classical dancing हो या ना हो, you can feel like dancing every day and feel that nobody is watching. दिल खोल के डांस करो क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है और मन को भी ताजा करता है, मन को हल्का जरूर करता है. So that's nice. We Yeah. should get you to get small children also dancing along. Okay. Very good. Classical dancer. Yes. Anything else? So yeah, those are my de-stressors. Very good. तो पहचानो खुद को, अपने आप को और ऐसे कोई चीज healthy hobbies that you can have so that you can have better peace of mind, better balance of your mind, personal and professional work और life को हम लोग संभाल सकते हैं. Have hobbies and do things that are close to your heart because आप जितने भी shows मन दर्पण का देखे या ना देखे, stress तो आपका जिंदगी का एक हिस्सा बनने ही वाला है. It is a part of life and we will learn how to deal better with stress. We will not be able to eliminate stress. So, important advice taken through your examples. Finally, we are also happy to say and share that Alvita is also doing part of her internship at Wellsprings Counseling Clinic. So, we would like you to share your experience of your internship here at Wellsprings. It's great experience, wonderful experience. I have learned so much from Dr. Fabian. He's a wonderful teacher. He's very empathic. Really, you are Thank very you. empathic. You are so passionate about mental health, about spreading awareness, about understanding the patients. And I think we meet the right type of people, no? हमारे It's show के wonderful. तीनों लोग जो आपने देखा है, they have shared their stories for you to have a better understanding of mental health. I So would say that yes, anyone who wants to understand mental health, to understand the challenges, should actually come and do the internship with you, how with your nice, guidance. I how really nice. would suggest that. Please do Yes, that. yes. So yes, we'd like to say that Wellsprings, the doors are open for an internship that you need to take. If you are doing mental health, if you're studying, and you need to have internship, you need to know things better, hands-on. Then yes, we are there. You need to get in touch with 908-209-3848.
That's a WhatsApp number to get in touch with, and we will try and help you definitely. What is important to note and take home is जो भी आप करते हैं दिल लगा के करो. Do it from your heart. Do it with a sense of passion, and make sure that you enjoy every moment of it. Then life is not that tough or not that complicated, right? So thank you for joining us. Thank you for being part of our Mann Darpan season 2, episode 2. We have some more things that we want to remind you with, and let those flash on the screen. So let me remind you that Mentastic is our program that we have for the children, and all through these weeks of May, we have the summer edition of Mentastic going on. बहुत सारा मजा आ रहा है बच्चों के साथ. Every morning 8 to 8:40, we believe in making the mind fantastic, right? So we are in the last few days of completing Mentastic, but Mentastic also happens every month. There is one session for children for their mental health. So again, get in touch with 908-209-3848 via WhatsApp, and we will be happy to have kids join our Mentastic program. We look at a holistic, all-round development of kids, from their personality to their mental balance to an understanding of mental health awareness. This is for school-going kids. We also have our online daycare, and these are sessions in stress management. These are sessions in personality development and self-awareness. We help you take life better, and these are 4 sessions of 1 hour each that happens online. Register with us via WhatsApp on the same number, 908-209-3848. We also have Ouch. Definitely, you remember that it is our support group that runs for people who think a lot. कुछ एंजाइटी, कुछ डिप्रेशन, ज्यादा सोचना, ज्यादा डरना, ऐसा अगर हो तो महीने में एक बार जुड़ जाना हमसे on a Zoom meeting that we have. It's called Ouch because Ouch we decode as Overthinkers Unlimited Chill Out Help Zone. And this now is the second Sunday of every month at 12 o'clock. 12th June coming up at 12 o'clock. Don't forget to be a part of Ouch. Share your thoughts with us, and we will also guide you on how to make life better and sweeter. We also have, don't forget, this is the second and the fourth Saturday as we have Bato Bato Mein. It's our candid conversations on mental health. And the last session that we had was a frank talking of mental health with Chaitrali. We were chatting up about different issues of mental health. This Saturday, we have another program lined up for you at 8 o'clock, where we'll bring out much more awareness about mental health, taking away shame and stigma that is attached with it. So join us today on Wellsprings Counseling. That's our Instagram handle. That is our YouTube handle as well. You can have our various videos that are there, all centered around better, positive mental health. Inko dekhna na bhuliye. You can like, you can subscribe, you can share, you can do all of it to spread mental health better. So don't forget, today 8 o'clock, Bato Bato Mein. And then finally, continue to be with us as season 2 keeps rolling out, 1/4 Saturday at a time. Har chauta Shanivar ko jud jaiye for our episodes of mental health. And there are some of the earlier episodes that are available on YouTube or on 1MD. Please go through them and enhance your understanding of mental health. We are ever so thankful and grateful to our show coordinator, who is there, Anirudh Sapadnekar, who puts everything together for us and lets everything go smoothly for us. आपके बिना ये शो तो अधूरा है, my dear audience. जुड़ते रहना. अपना मैसेज जो है, हमारा पैगाम जो है मानसिक स्वास्थ्य का, that we have to have balanced mental health, positive mental health is what we want you to share with everyone. And always, as we say, no shame, no stigma with mental health treatment. So thank you for joining us. We look forward to another month with many more such programs, and lots of our workshops are also rolling in. जून जो शुरू हो रहा है स्कूल के लिए, स्कूल के टीचर्स के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के पेरेंट्स के लिए. We have lots of workshops lined up in the month of June, and we will keep joining with you for all these mental health endeavors.
Take care. All the very best till we meet again. Keep in touch via WhatsApp 908-209-3848. This is Dr. Fabian Almeida, psychiatrist, counselor, and motivator, signing off. Thank you. Take good care